Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine at your place. So, students, today we are going to start with the next lecture, and it is of class 4th. And this is the lecture number 1. Fine, this is the lecture number 1 of lesson number 27 posters. Lecture number 1 of chapter 27 posters. Fine. So, we are going to start with a poster making today. I'm going to tell you how to frame a poster. This is basically a new topic for you all as you haven't done in your previous classes. But in drawing subject, you might have drawn this. You might have made this. So let us proceed further. So today we are going to start with the making of a poster. Fine. So first is, what is a poster? A poster is basically a play card. It's a play card that either carries a social message or promotes a product or the service. You might have seen on the pillars, on the roads, on the pillar sides, you might have seen the big posters which are promoting some social message, which are giving some social messages. फाइन, जो क्या कर रहे होते हैं, जैसे पोस्टर्स में लगा होता है, आपने कभी देखा होगा जब इलेक्शंस होते हैं तो पोस्टर लगा होता है, गिव वोट टू दिस. फाइन, बहुत सारे पोस्टर्स लगे होते हैं. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पोस्टर्स होते हैं, महात्मा गांधी जी के पोस्टर्स भी होते हैं बहुत जगह. हम भी जब अगर कभी किसी चीज़ की प्रमोशन करना चाहते हैं, प्रोडक्ट की, आपने देखा होगा बच्चों की नापी पैंट्स होती हैं, हगीज़, उनके पोस्टर्स भी लगे होते हैं बहुत सारे. सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोस्टर्स टू they are used means to promote something or to give a social message, या कभी कोई सोशल मैसेज देने के लिए भी हमें, आपने देखा होगा कभी पे आप हिली एरिया में जाओगे, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, वहाँ पे लिखा होता है ना, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव. वहाँ पे ये क्या होता है, एक मैसेज होता है, पोस्टर पे एक मैसेज होता है जो हमें एक सोशल मैसेज दे रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. फाइन. सो नेक्स्ट इज, posters are generally designed to pass information by grabbing your attention much like a signboard. आपने साइन बोर्ड भी देखे हैं, लेफ्ट राइट ट्रैफिक साइन बोर्ड्स देखे हैं ना आपने, आप देखते ही समझ जाते हो इसका मीनिंग क्या है, राइट. सो पोस्टर्स आर ऑल्सो सेम. पोस्टर्स भी वही होते हैं जो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम देखते ही हमारी अटेंशन उस पर पड़ जाए और हम वो चीज़ सोचें कि ये क्या है. Any relevant information can be passed on to us with the help of the posters. कोई भी relevant information, it can be related to any other, it can be related to any topic, but it should be relevant. मतलब उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, वो रेलिवेंट होनी चाहिए. सो पोस्टर्स बेसिकली प्रोवाइड अस द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन. फाइन. व्हाट मोर, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. नेक्स्ट इज, देयर आर फ्यू पॉइंट्स to keep in your mind while designing the posters. ये कुछ points हैं आपको अपने mind में रखने हैं posters design करते हुए. So the first is, poster should contain something attractive. It should be colorful. It should be attractive. Means हम जिससे हम देखते ही पढ़ने लग जाएं. Like a picture or a logo to attract the reader or the passerby. जो भी वहाँ से pass on कर रहा है, जो भी वहाँ से जा रहा है, उसकी मतलब नज़र उसी पोस्टर पे पड़े और वो उसको देख के पढ़ने लग जाए. बहुत बार होता है जब हम कभी ट्रेवल कर रहे होते हैं और बहुत सारे पोस्टर्स होते हैं रोड साइड्स पे. फाइन, हम क्या करते हैं, उनको देख के पढ़ने लग जाते हैं. सो दे आर नोन एज अट्रैक्टिव. कैसे होते हैं वो अट्रैक्टिव. सेकेंड पॉइंट इज, द मैसेज टू बी गिवन इज यूजुअली शॉर्ट एंड रिटन इन अ फ्यू बट इंटरेस्टिंग वर्ड्स. जो मैसेज पोस्टर पे लिखा होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए. फाइन, छोटा सा मैसेज होना चाहिए बट इंटरेस्टिंग वर्ड्स होने चाहिए. मीन्स वर्ड्स शुड गिव अ रेलिवेंट मीनिंग. दे शुड बी बेसिकली इंटरेस्टिंग. अभी मैंने आपको बताया डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव. इट्स बेसिकली अ शॉर्ट, छोटा सा है ये, और इससे हमें कितना बड़ा मीनिंग मिलता है, राइट. द पोस्टर्स शुड बी डिजाइंड इन दिस वे. नेक्स्ट इज थर्ड नंबर, पोस्टर्स शुड बी आर्टिस्टिक unless they are stating facts. The readers should want to read the poster. Means जब भी कोई रीडर पोस्टर रीड करे वो क्या होना चाहिए, artistic. Means it should be basically art should be done over there on that poster.
Next is a good slogan can be added to make the poster more attractive. Try to give a catchy one liner to go with the poster. हमेशा कभी भी क्या होना चाहिए, अब जैसे दिसंबर एंड होता है, विंटर एंड होता है, तो सेल लगती है, तो सेल के लिए हम पोस्टर बनाते हैं, सेल 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 50% सेल ऑन द पर्टिकुलर आइटम्स. So those catchy lines, sale, 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 these are the few catchy lines. This is the basically the catchy lines. So which gives the attraction, which makes the poster more attractive. वो poster को क्या करता है और attractive बना देता है. Fine. So there should be a catchy line or a slogan. To make the poster more attractive. Fine. Next what we are going to learn is how to make a poster. Now we will learn how to make a poster. Get a large piece of paper. First of all, take a large piece of paper, or you can make it on a drawing sheet or in your English notebook also. Poster board or another baking material. Next is write a list of the elements you need to include in your poster. Then after that, first of all, you should read the topic or on which thing you need to make a poster. Then you should write the particular elements. फिर आपको लिखना है एक पेपर पे particular elements लिखने कि क्या क्या आप इस पोस्टर में add on करोगे. Then sketch out your design on a regular piece of paper. एक normal rough piece of paper लेना है, उस पर आपको अपना design sketch on करना है. ठीक है, एक रफ डिज़ाइन प्रिपेयर करना है कि आप वो पोस्टर कैसे प्रिपेयर करोगे. नेक्स्ट इज हैव योर मेन स्लोगन और द हेडलाइन इन द सेंटर ऑफ द पोस्टर. जो भी आप कैची लाइन या कोई स्लोगन लिखना चाहते हो वो पोस्टर के मिड में, सेंटर में लिखना. यूज़ द टॉप, बॉटम एंड द साइड्स ऑफ एनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स. और जो बॉटम साइड होती है, ठीक है, ये टॉप या बॉटम साइड होती है, उसमें जो भी आप इंफॉर्मेशन बेसिकली उस पोस्टर में वो प्रोवाइड करना चाहते हो आप वो मेंशन कर सकते हो. Next is color your poster with colored pencil, crayons or the markers or paint. Then you have to make it attractive. For that you need to color your posters with the colored pencil, crayons or marker or any paint. It can be any color. Then you can add on the glitter also to make more attractive. You can add on the symbols, graphics. You can add so many things. So these are the few points, 7 points which you need to keep it in your mind while making a poster. Now what is the format? This is basically the format of making a poster. See how we frame a poster, what all things are required. This is not the fixed format. You can make the poster in your own way also, but you should follow it. Issuing authority. First of all, you should write the name of the organization. This is a formal kind of posters. You should write the name of the organization. Fine. For whom you are going to make a poster means for what product you need to promote, which is based on that organization. Then you have to write the title. Then you have to prepare a sketch on a rough paper, as I already told you. Then you have to write the date, time and venue of the things. Then you have, at the end, you need to write your contact number also. Now look over here. It's a basic example. Your presents. Fine. Let us see what all are there. This is basically a square in which we have made a poster. Fine. Gurg sale. The name of the organization is Gurg and it is related to the sale. Then Saturday, May 19, calling all to come, sell and shop. And then timing is given. Then address is given. Call me on this number. Then the contact number is given. Fine. This is basically one sample of the poster. So in this way you can use other methods also or simpler than this also. Fine. So let us look forward. Now this is the question number 1 which is given in your book on page number 118. So what is the question? Let us read. A. Design a poster promoting the launch of a new box of crayons. Fine. There is a new box of crayons. You need to promote it. एक नया box आया है कोई कंपनी का crayons कलर का, आपको उसकी promotion करनी है. You need to keep in the mind that these crayons are non-toxic. आपको लिखना है वहाँ पे poster बनाते हुए कि वो crayons कैसे non-toxic. They are basically non-toxic. Fine. Unlike most crayons in the market. Now design it
so that kids can get their hands on it as soon as possible as they are limited edition. तो आपको इस वे में डिज़ाइन करना है कि बच्चे उसको देखते ही ले लें. They keep their hand, they keep their eye as soon as they fetch it. और एकदम से वो उसे ले ले. इतना आपको ब्यूटीफुली पोस्टर बनाना है कि उसकी एडवर्टाइजमेंट, उसका पोस्टर देखते ही बच्चों को इंटरेस्ट आ जाए उन कलर्स में और वो उन्हें परचेज कर ले. Now this is the example which I have taken. Fine. The crayons box that talked. You can frame it like this, the beautifully. It should be attractive. Now children will be keen interested to buy this kind of crayons box. अगर बच्चे देखेंगे तो वो इंटरेस्टेड होंगे कि हमें तो यही लेना है ऐसा ही. Fine. One more example. This is the handmade. We are a box of crayons, each of us unique. But when we get together, the picture is complete. It's obvious when you use all the colors together, the picture becomes complete. Fine. There is one more example. You can make the poster in this way also. And you can mention over here the non-sticky crayons colors. Fine. So these are basically 3 options I have given you. You can prepare any, or you can prepare it in your own way also. Fine. In your own different way also. You can prepare the poster yourself. Now the next question is C part. Design a poster promoting the launch of a new bicycle. Now there is a new bicycle in the market. You need to promote its sale. आपको उसकी sale promote करनी है. उसके लिए आपको poster बनाना है. Emphasize on how making this bicycle to school will help reduce the level of pollution. और उस bicycle से क्या होता है, अगर आप स्कूल जाते हो तो pollution भी reduce होता है. Fine. Now look over here. You can design it like this. National Bike to the School Day. You can give the name to your bicycle. Fine. You can frame it in this beautiful manner, or you can write the caption also over there. No gas, no traffic, free to parking, pollution free. Fine. You can make the symbol over here of bicycle. Then you can write it free workout. Ride your bike, save the world. Bike riding is basically the free workout. There is no pollution. Free of parking. There is no parking charged for bicycles. No traffic, no gas. Fine. So this is the example over here. This one and this one for this question. You can I hope you will make your own posters more beautiful than this. So next is, this is all about the poster making. Next is your homework. This is part B, is given as the homework. So what is it? Design a poster inviting people to come to your school fest. In the school there is a fest which is arranged by all the school members and the management members. Fine. Fest can be anything. It can be carnival, festival, anything. So make sure that you put the relevant information. और आपको उस पर क्या क्या information लिखनी है. Sponsors name, कौन sponsor कर रहा है उससे, the various events, और उस fest में क्या क्या events होंगे, guest performance and the prize to be won, और क्या क्या जो events होंगे उनसे related prizes भी होंगे, performance से related prizes भी होंगे. So you have to mention all this information in that particular poster. Fine. So this is your homework. That's it for today. It's very easy and it will come in your exam also. Keep this in your mind. Thank you.